All right, guys, good evening. Can you all see me? Can you all hear me? Can you all see me? Can you all hear me? A quick feedback. I think I'm live. Yes. Hi, guys. Good evening. Good evening. Good evening. Hi, Yashas Reddy. Good evening. I hope everybody is audible. I mean, I am audible to everyone. Yep. Hi, Vikram. Good evening. Okay. So, what did we do? Okay, I'm so sorry for skipping few classes. There's been a little bit of, family emergencies and the other situations I've been dealing with. So, trying to keep it both ways. अब बहुत मुश्किल होता है कि फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ उसके साथ साथ अगर दो अलग प्रोफेशन है दोनों को मैनेज करना तो trying to get in both the senses. I'll try to do the best I can. So on Monday, I think we spoke about the differentiation between the peptic ulcers, that is the duodenal and the gastric ulcers. We'll be talking about, so we've already spoken about how do they present, the component of pain and everything. The clinical presentation is also sorted. I'll be talking about how do you evaluate them, right? So we talk about the evaluation of the peptic ulcer disease. So when you talk about the evaluation of the peptic ulcer disease, right? Now, when you look at a patient of peptic ulcer disease, what is the principal complaint that you have? In all patients of peptic ulcer disease, the principal complaint is going to be pain associated with upper GI bleed. ठीक है, मुझे बस इतना पता है कि पेशेंट को दर्द हो रहा है और upper GI bleed है, और ये जो दर्द है, the pain that we are talking about is in the epigastric region. इट इज इन दी एपीगैस्ट्रिक रीजन. ठीक है, तो एपीगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है, अपर जीआई ब्लीड है. अपर जीआई ब्लीड का जो पेशेंट है उसके क्या क्लासिकल फीचर्स है? पेशेंट हु इज गोइंग टू हैव एन अपर जीआई ब्लीड will present to you obviously hematemesis. There will be more of hematemesis in association with melena. So melena is nothing but black tarry stools. When the blood mixes with stools, it presents with melena. आपसे maximum इतना पूछ लेगा कि what is the quantity of blood required to cause melena? Remember, the minimum amount of blood required to cause melena is 60 ml. Minimum 60 ml अगर stools में mix होगा, then only you will have that black tarry stools. ठीक है. Raj will share the notes of entire stomach series today after the class. We'll make sure it is uploaded at the earliest. ठीक है, तो मेरे पास मोटा मोटा पेशेंट ये है कि दर्द है, that is pain with an upper GI bleed. आप इसको कैसे evaluate करोगे? Now, any patient who is going to present to you with an upper GI bleed, obviously logical term says आप पहले जाके upper GI endoscopy करो. You will be performing an upper GI endoscopy. Okay. Now, when you do an upper GI endoscopy, you will see there is an ulcer which is going to be present. So, on an upper GI endoscopy, you will see there is presence of an ulcer if it is a patient of peptic ulcer disease. Now, ये जो ulcer आपको दिखेगा, ये ulcer आपको दो जगह पे दिख सकता है. It can be found in two different places. Either you will see in the stomach or you will be seeing in the duodenum. ठीक है. Either you will be seeing in stomach or you will be seeing in the duodenum. These are the two sites where you can see the ulcers basically. Okay. Now, whenever the ulcers are going to be seen, you need to be very carefully evaluating when it comes down to stomach. Because stomach में जो ulcers हैं, they are usually malignant. ठीक है, तो I'll put it in a very factual manner that all ulcers in stomach are considered, they are considered to be malignant, until proven
अदरवाइज। ठीक है, इससे बेटर स्टेटमेंट मैं आपको नहीं दे सकता हूं कि जितने भी आपके अल्सर्स है स्टमक में, वो सारे अल्सर्स आप कंसिडर करोगे कि वो मैलिग्नेंट है अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। और डिओडनल अल्सर्स में आपको बायोप्सी की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सो वी से इट इज ऑलमोस्ट, duodenal ulcers are almost never malignant. Duodenal ulcers are almost never malignant, so I'm least bothered about it. Now, when you do an upper GI endoscopy, especially in the stomach, right, there is a maneuver that you have to do. Any idea ki stomach mein na? So when you look at the stomach per se, if I have to say here, and this is the orientation that you have. ठीक है, now when you do a gastroduodenoscopy, इसी का दूसरा फैंसी नेम अपर जी एंडोस्कोपी का गैस्ट्रोडियोडनोस्कोपी भी है। अगर कोई बोलेगा ये गैस्ट्रोडियोडनोस्कोपी क्या होता है, ज्यादा डरना नहीं है, उसको चुपचाप बोलना है भाई ज्यादा स्मार्ट मत बन, इसको अपर जी एंडोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गैस्ट्रोडियोडनोस्कोपी। तो चाहे आप इसको गैस्ट्रोडियोडनोस्कोपी बोलो, ठीक है, या फिर अपर जी एंडोस्कोपी बोलो, बोलो सेम ही है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि व्हेन यू आर पुटिंग द एंडोस्कोप, दिस इज हाउ द एंडोस्कोप इज गोइंग एंड दिस इज द कैमरा दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो जब आप कैमरा लेके चलोगे तो आपका विजन तो ऐसे है। ठीक है, सो यू विल बी एबल टू सी वॉट एवर इज इन द विजन। चाहे आप ऊपर भी हो तो विजन तो इतना ही कवर कर रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, फंडस में जो अल्सर है, इफ देयर इज एन अल्सर इन द फंडस, लेट्स से देयर इज एन अल्सर व्हिच इज फॉर्म्ड इन द फंडस, अब मुझे बताओ ये अल्सर जो फंडस में है उसको कैसे विजुलाइज करोगे? बिकॉज एज यू टेक द एंडोस्कोप एंड यू कंटिन्यू टू गो, ठीक है, आपको ऊपर जो अल्सर हो कैसे देखोगे? हाउ वुड यू बी एबल टू सी द अल्सर दैट इज प्रेजेंट अप टॉप? कैसे करोगे? तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक माय एंडोस्कोप एंड आई एम गोइंग टू टर्न इट अराउंड. ठीक है, तो इसको उल्टा मोड़, आई विल बेंड इट अक्रॉस एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ यू मनूवर. जब आप यू मनूवर करोगे, यूं करते हुए आप ऊपर वाला पार्ट देख लोगे और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वहां पे अल्सर प्रेजेंट है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज इन एवरी पेशेंट ऑफ स्टमक व्हेन यू आर डूइंग एन अपर जी एंडोस्कोपी, यू हैव टू डू अ यू मनूवर, राइट? और वी कॉल इट एज द यू मेथड. It is a U method in upper GI endoscopy. अब ये जो U method आपको यूं ही बता देगा कि यहाँ पे एक अल्सर प्रेजेंट है. So that is why it is very very important. आई बात समझ में? Is everybody clear with that? ठीक है, तो ये जो यू मेथड है, यू करते ही आपको ऊपर की चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी. इफ आई हैव टू शो यू एन इमेज, आई नो कि बोलोगे सर कुछ तो दिखा दो, तो चलो बेटा आपको कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं. ये कहाँ चला गया? One second guys, I think it is on my other folder, just sharing it. One second. So okay, hold on for a second, it's coming in a bit. Okay, aa gaya. So this is what we call it as a U maneuver. ठीक है, तो as you can see in a U maneuver, you are able to revert back and see it. ठीक है, तो फंडस में देखने के लिए U maneuver करना जरूरी है. I hope everybody is clear with this. ठीक है, now when you do the entire endoscopy of the stomach based upon where the ulcer is present, देखो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन it allows me to plan for my surgeries. तो बेस्ड अपॉन द अपर जी एंडोस्कोपी, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन है. यहाँ से आपको जीआई के क्लासिफिकेशंस भर के हम आपको सुनाएंगे. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ क्लासिफिकेशंस. ठीक है, सो फॉर ऑन द बेसिस ऑफ अपर जीआई एंडोस्कोपी, इफ अ पेशेंट इज हैविंग अ गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि गैस्ट्रिक अल्सर प्रेजेंट है. नाउ दिस गैस्ट्रिक अल्सर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ a classification which is called as the modified Johnson's classification. It is what we call it as the modified Johnson's classification. Beta, how do you do U method is endoscope का ना, देखो again you need to understand, when you have the endoscope in your hand, I'll just explain it to you in this particular manner. देखो endoscope का जो instrument panel होता है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, and then you have this
एंडोस्कोप पर से विच इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये आपको एंडोस्कोप है, ये कैमरा प्रेजेंट है। यहां पे आपको दो व्हील्स मिलेंगे, एक व्हील ये होगा एंड देयर इज अनदर व्हील दैट इज प्रेजेंट, दैट टू व्हील्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है। सो यू कैन रोटेट दीज व्हील्स एंड दे मूव, ठीक है। तो दो व्हील्स हैं जिसको आप रोटेट कर सकते हो। ना एक व्हील जब आप रोटेट करोगे इट इज गोइंग टू मूव लैटरली, तो ये जो मूवमेंट होगी, अगर आप ये येलो वाला व्हील करोगे तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला जो व्हील आप रोटेट करोगे इट विल गो, इट विल बेंड, सो द बेंडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये ऐसे बेंड करेगा, तो बेंडिंग इज कंट्रोल्ड बाय द व्हील। तो आप पुश करोगे और जैसे व्हील मोड़ते रहोगे, या तो वो राइट लेफ्ट मूव करेगा या तो ऊपर नीचे मूव करेगा। अगर आप पूरा व्हील मूव करोगे तो ये उल्टा ऐसे मूव करेगा, तो इट इज गोइंग लाइक दिस। नो, जब आप व्हील मूव करोगे इट विल बिकम लाइक दिस, सो दिस इज लाइक दिस। सो दिस मैन्यूवर इज डन बाय वन ऑफ द व्हील्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सी दैट हाउ इट इज गोइंग टू टर्न अक्रॉस, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं यू मैन्यूवर। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड जॉनसन्स क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर्स दैट वी हैव, ठीक है। तो मॉडिफाइड जॉनसन में व्हेन यू हैव द टाइप 1 गैस्ट्रिक अल्सर, टाइप 1 is the most common one. This is present on the lesser curvature, so this is the ulcer on lesser curvature. It is the ulcer on lesser curvature, and that too at the angularis incisura, at the angularis incisura, ठीक है। This happens to be the overall most common type of gastric ulcer. Then you have the type 2 gastric ulcer. In type 2 gastric ulcer, there are two ulcers which are present. So there are two ulcers. There are two ulcers. One in the body of the stomach. Another one is in the first part of the duodenum. One in the body of the ulcer. One is going to be in the body of the stomach. Another one is going to be in the first part of the duodenum, right? Then you have the type 3 gastric ulcer. Type 3 is what we call it as the pre-pyloric gastric ulcer. Then you have the type 4 gastric ulcer, ठीक है। तो type 4 में क्या, it is present high on lesser curvature. It is high on lesser curvature. And the last one is what we call it as the type 5 gastric ulcers, which is what we call it as the NSAID induced gastric ulcer. NSAID means non-steroidal anti-inflammatory drug that induce gastric ulcers, ठीक है। मानस सर 2.0 के लेक्चर्स कब अपडेट करेंगे आप? ऐप में रिवीजन वाले लेक्चर्स हैं 2.0 सेक्शन में। बेटा आई थिंक सी whatever we have done in the 2.0 version, we have redone few videos and we have added few. Rapid revision is entirely redone, ठीक है। तो complete rapid revision वापस हमने पूरा रिकॉर्ड किया है, that is in the 2.0. अभी 3.0 आने वाला है, and that you will get the entire new videos of the entire lecture series also, ठीक है। So that's also happening. Now coming back here, again बोलोगे सर ये सब तो मतलब how do we remember it, all that nonsense, blah blah blah. So for that I don't disappoint my students. So this is how you visualize it. So this is the stomach, and let's see the ulcers which are going to be present. Now if the ulcer is present here, ठीक है, इसको आप बोलोगे ये आपका टाइप 1 गैस्ट्रिक अल्सर। इफ द अल्सर इज प्रेजेंट हियर, दैट इज इन द बॉडी ऑफ द स्टमक and in the first part of the stomach, this is what we call it as the type 2 gastric ulcer. If the ulcer is present, if I have to divide this, this is going to be the cardia of the stomach, this is the fundus of the stomach, this happens to be the body of the stomach, this is going to be the antrum, and this is going to be pylorus. Now we say pre-pyloric ulcer which is present here. So if the ulcer is here, this is your type 3. If the ulcer is going to be present here, that is high on lesser curvature. This is high on lesser curvature. This is going to be type 4. ठीक है, इतना ही गेम है, nothing more than that. अरे नहीं बेटा, जिसका जो सब्सक्रिप्शन होगा 3.0 के वीडियोस अपडेट हो जाएंगे, नोटबुक आई मीन जो अपना बुक है वो वही रहेगी, टेंशन मत लीजिए। It's just the new version of the videos will be much more crisper. The content will remain the same, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो।
मानस बेटा हर दिन बेली थोड़ा लिखी जाती है, ठीक है, पढ़ाने का तरीका, थोड़ी चीजें इधर उधर, क्वेश्चंस वगैरह, तो 3.0 विल हैव सर्टेन थिंग्स ना, थोड़ा मतलब वीडियो देखने में मजा आना चाहिए ना, तो उस हिसाब से है, तो टेंशन मत लो यार। तुम लोग ना मुझे ऐसे मतलब यू जस्ट पुट मी इन अ कॉर्नर स्पॉट, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि बोलना क्या है। क्लियर है? शॉर्ट है यार, तुम लोग ना बड़े ट्रिकी बच्चे हो। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द मॉडिफाइड जॉनसन्स क्लासिफिकेशन? क्विक फीडबैक। मॉडिफाइड जॉनसन्स क्लासिफिकेशन आई बात समझ में? कैन यू मूव ऑन? कैन यू प्लीज मूव ऑन? क्विक फीडबैक। कैन यू मूव ऑन? कुछ तो पंगा है। चलो, सो दिस इज ऑन द बेस ऑफ अपर जे एंडोस्कोपी कि आपको पता चल गया कि ये डिओडनल अल्सर है कि गैस्ट्रिक अल्सर। नाउ whenever you have a gastric ulcer, right, so in the gastric ulcers, once you have done the upper GI endoscopy, the biopsy is mandatory. So I say in the gastric ulcers, specifically in the gastric ulcer, you need to have an upper GI endoscopy with biopsy, ठीक है? तो आपको upper GI endoscopy with biopsy should be taken, ठीक है? Now the question is, how many biopsies should be taken? How many biopsies should be taken? Should we take one biopsy, two, three, four, multiple? कितना है? So normally we say that whenever you're taking a biopsy in a gastric ulcer, kindly take multiple biopsies. So what are the minimum biopsies that should be taken? So we say here the multiple biopsies should be preferred. Now in the multiple biopsy, what is the minimum number that you need to know? Remember the minimum number of biopsy. The minimum biopsies has to be 10 samples. The minimum biopsy has to be of about 10 samples, right? That is what it is expected to be taken for, right? Now, clear? So, now once you have taken the biopsies, now I would like to evaluate further. Okay. Now, usually these ulcers are secondary to H. pylori, and H. pylori is a major culprit here. So whenever we talk about the gastric ulcers or the duodenal ulcers, per se peptic ulcer disease, you have to evaluate for H. pylori. So the first thing that I did was an upper GI endoscopy because of the presentation. ठीक है, अब मुझे देखना है कि H. pylori की presentation है कि नहीं. So I'll be evaluating for H. pylori. So we'll be doing the second investigation, that is going to be H. pylori evaluation. So how do you evaluate if the patient is infested with H. pylori or not? Because the treatment will purely depend upon this particular context. Okay? So there are different methods that you have, right? The first one, that is your urease assay test. We have the urease assay test, and this urease assay test can be done with the help of a kit which is called as a CLO kit. Now, what is the CLO kit? It is your Campylobacter. It is a Campylobacter like organism test. So this is a test where you take a sample from the ulcer, you put it on the tissue, right? That tissue that you've taken from the ulcer, you put it on a strip that is called a CLO kit. It is usually yellow in color. If you put the strip, if it is a, because the H. pylori is a urease producing bacteria, when that urease is going to react with that particular strip, it will turn into purple and the test will become positive, right? Now, what do you mean by this? I'll just show you the image for the CLO kit so that you understand it better. This is how a CLO kit would look like. Okay.
So this is how a CLO kit would look like, right? Now look at this. This is how you can say if it remains yellow, it is going to be negative. So here I can see after putting a tissue, this is going to be a negative test. Whereas it is turning purple, this is going to be a positive test. Okay. So that is what we call it as the CLO kit or the Campylobacter-like organism test, right? It is the fastest, it is the easiest one to do because any of you doing an upper GI endoscopy, taking a sample is not a big deal. So you take the chunk of the tissue just to get an visualizing effect of this. If let's say the ulcer is anywhere, okay, it could be anywhere. Let's say just for the component sake, I'm saying the ulcer is present in the duodenum, which is present here. Okay, so I will take the endoscope. The endoscope goes here. I have visualized the ulcer. With the help of a forceps, I will take the tissue sample and this tissue sample will be brought back. Okay. Now this is the CLO kit that you have and this is the strip that is present. Okay. So whatever sample or the tissue that you have taken, you're going to place that tissue here. Now once you place this tissue here, this is what the results interpretation is. If it turns purple, it is positive. If it is not going to turn purple or it does not change color, it remains negative. Now that is why, remember, the Campylobacter-like organism test or the CLO kit is now considered to be as the investigation of choice for H. pylori in peptic ulcer disease. In peptic ulcer disease. So if you're writing a competitive exam, this is what the question they're going to ask you in a very simple manner. Okay. So that's a urease test or the urease assay test. What are the other tests that you can talk about? You can talk about they can perform the histology. They can do culture. Now, obviously, any bacteria, I would say culture is going to be best, but it takes a long time. Then for prognosis, you have something called as the urea breath test. The problem with the urease breath test or the other one is the antibodies. This antibody is going to be an IgG4 class of antibodies. Both of them remain positive even after, or like not even after, let's say they remain positive for 6 months after H. pylori eradication. Right. So the urease breath test and the antibody titer, even after you eradicated the entire H. pylori bacteria, they still remain positive. So they're not considered to be very reliable per se. Okay. In a long term, when you're assessing the prognosis or you're looking for, relapse or you're talking about recurrence, then it might help you. But otherwise, in the first 6 months, it has got no role per se because they still remain positive. Right. Next, you have the stool antigen test. Now remember, the stool antigen test is the most cost effective. सबसे सस्ता टेस्ट यही है. The most cost effective test. जो है सबसे सस्ता, economically best. It is going to be your stool antigen test. ठीक है. तो हमारे पास पेशेंट है H. pylori की evaluation के लिए मेरे पास buffet of investigations available है. I can start with the urease breath test. I can go with histology. I can do a culture, urease breath test, antibodies, and stool antigen. But currently, we now prefer only the CLO kit, that is your Campylobacter-like organism test, जो मुझे clearly बता देता है कि भैया यहाँ पे ulcer is due to H. pylori or not. अच्छा, एक term है that when you're doing an upper GI endoscopy, and in an upper GI endoscopy, if you find there is a duodenal ulcer, ठीक है. Now as duodenal ulcer never pre-malignant, यहाँ पे आपको बायोप्सी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है. लेकिन समटाइम्स और कभी कभार यहाँ पे आपको 2 अल्सर्स एक साथ देखने को मिलेंगे. ठीक है. Now when you say 2 ulcers which are together, for example, if I give you a prospect, let's say this is the esophagus, this happens stomach, this is the duodenum that is present. And as I was evaluating, I found there is one ulcer on the anterior surface
एंड देयर इज अनदर अल्सर ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस। दोनों अल्सर्स एक ही जगह पे एक ही साथ देखने को मिला है। तो आपने किया एंडोस्कोपी और एंडोस्कोपी में आपने देखा है एक अल्सर यहाँ पे, एक अल्सर यहाँ पे। सो देयर इज वन अल्सर ऑन द एंटीरियर सर्फेस, so there is one ulcer, that is an anterior ulcer is present, and एक और आपको देखने को मिला कि यहाँ पे posterior ulcer भी है। So there is an anterior ulcer, there is a posterior ulcer, and both of them are together. What is this called as? कोई बताएगा? कोई अच्छा बच्चा बताएगा कि इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? व्हाट इज दिस कंडीशन नोन एज? जहां पे एक ही जगह पे दो अल्सर एक दूसरे के आजू बाजू, मतलब एक दूसरे को स्टेयर करते हुए देख रहे हैं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसको मान लो कि एक आपका मेल अल्सर हो गया, एक आपका फीमेल अल्सर हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे? व्हाट इज दिस नेम गिवन एज? व्हाट इज दिस अट्रैक्शन और इन्फैक्चुएशन कॉल्ड एज? बोलो बोलो। इसको आप बोलते हो किसिंग अल्सर। ठीक है, both of the mucosal surface comes in contact and they erode and then they form the ulcer। तो जब अल्सर एक दूसरे के छूने की वजह से हो रहा है तो ऑब्वियसली किसी किसी की वजह से होगा, एंड किसी किसी की वजह से नहीं, किस किस की वजह से होगा, एंड दैट किस इज कॉल्ड एज द किसिंग अल्सर। ठीक है, सो इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ किसिंग अल्सर। नाम याद रख लेना, थोड़ा फैंसी है बट इट इज गुड। ठीक है, अच्छा क्लियर। सो दिस इज with respect to the H pylori evaluation। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नो whenever you're doing an H pylori evaluation, if a patient is already taking some antibiotics, ठीक है, वो पहले से ही कुछ एंटीबायोटिक ले रहा है, उसको बोलना है कि भैया अपना एंटीबायोटिक बंद कर देना। ठीक है, यू हैव टू स्टॉप द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वन सेकेंड, आई थिंक दिस कलर इज नॉट विजिबल ना, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, I need to have a different color। क्या कलर है जो यहां दिखेगा? ठीक है, now whenever doing an H pylori evaluation, बेटा येलो ऑलरेडी है। ठीक है, तो मुझे येलो नहीं चाहिए। तो H pylori evaluation करने के लिए ना आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, आई वॉन्ट टू थिंग्स टू बी डन। एक, अगर पेशेंट पीपीआई ले रहा है तो बोल देना कि भाई पीपीआई मस्ट बी स्टॉप्ड। द पीपीआई मस्ट बी स्टॉप्ड 2 weeks प्रायर टू द इवैल्यूएशन। और अगर पेशेंट एंटीबायोटिक ले रहा है, एनी फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स मस्ट बी स्टॉप्ड। तो ये फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। इट मस्ट बी स्टॉप्ड 4 weeks prior, right? A PPI must be stopped 2 weeks prior and the antibiotics must be stopped 4 weeks prior to the evaluation of H pylori, otherwise it will get false negative reports। as simple as that। ठीक है, तो हमने H pylori का evaluation भी complete कर लिया, and now I know, so I've done an upper GI endoscopy, I've done the biopsy, I've done an H pylori evaluation, तो I have covered the entire spectrum। ठीक है, तो इस एंटायर स्पेक्ट्रम में व्हाट हैव यू कवर्ड? यू हैव कवर्ड द विजुअलाइजिंग और आई कैन से द एंडोस्कोपिक इमेजिंग। तो एंडोस्कोप से ये पता चलेगा कि अल्सर है नहीं है तो कहाँ पे प्रेजेंट है। बायोप्सी से यू हैव रूल्ड आउट द मैलिग्नेंसी, यू हैव आल्सो परफॉर्म द CLO टेस्ट, सो नो दैट वेदर इट इज बिकॉज ऑफ H pylori और नॉट। इतना याद रख लेना एज अ नोट पॉइंट, कभी भी कोई भी अल्सर, पेप्टिक अल्सर डिजीज स्पेशली इन द स्टमक, ठीक है, अगर कोई ऐसा गैस्ट्रिक अल्सर प्रेजेंट है, अगर कोई ऐसा गैस्ट्रिक अल्सर प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है, इफ इट इज नॉट मैलिग्नेंट, सो आई कैन से इफ इट इज नॉन मैलिग्नेंट, it is non-malignant, if it is H pylori negative, and if it is non-NSAID induced. If it is non-malignant, if it is H pylori negative, and if it is a non-NSAID induced, what is your line of thought? तो आपको क्या लगता है ये किसकी वजह से होगा?
ना तो ये मैलिग्नेंट अल्सर है, ना तो ये मैलिग्नेंट अल्सर है, इट्स अ नॉन मैलिग्नेंट अल्सर, इट इज एन एच पाइलोरी नेगेटिव एंड इट इज नॉन एनएसएड इंड्यूस्ड, इट इज अ नॉन एनएसएड इंड्यूस्ड। तो अगर ये तीनों नेगेटिव है, what do you think it is more likely going to be? So always remember, in such conditions you have to rule out the Zollinger Ellison syndrome. You have to rule out the Zollinger Ellison syndrome. और ये जो Zollinger Ellison syndrome है, इसको आप गैस्ट्रीनोमा भी बोलते हो। So this I'm going to talk in detail when we talk about the neuroendocrine tumors of the stomach. तब हम गैस्ट्रोमा के बारे में बड़े डिटेली बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रख लो, इट इज कॉल्ड एज ए Zollinger Ellison syndrome। ठीक है, now you have the entire context of analyzing it and assessing it in what context the ulcers are formed. नाउ इट्स अबाउट द मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले आपने इवैल्यूएट कर लिया कि पेप्टिक अल्सर डिजीज कैसे बना, कहाँ पे है, इवैल्यूएट करके ये भी पता चला दिया कि कहाँ पे बन रहा है, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है। नाउ इट कम्स डाउन, बॉइल्स डाउन टू एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट कि भैया इसको मैनेज कैसे करोगे। तो टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो विल टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर disease. So the management of the peptic ulcer disease. ठीक है, so when talk about the management of the peptic ulcer disease, इसमें जो first line of management है, the first line of management is always going to be a medical management. ठीक है, अच्छा अगर आप थोड़ा प्यार से समझोगे कि मैनेज क्या करना है इसमें, ठीक है, तो पहले ये डिसाइड कर लो कि हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर डिजीज था वो बना क्यों था। ठीक है, द पेप्टिक अल्सर डिजीज वाज बिकॉज ऑफ एच पाइलोरोइज इन्फेस्टेशन। ठीक है, अब ये जो एच पाइलोरोई था ये कर क्या रहा था? एच पाइलोरोई वाज कन्वर्टिंग, इट वाज अ यूरियस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, इट वाज कन्वर्टिंग द यूरियस एंजाइम वाज कन्वर्टिंग यूरिया इनटू अमोनिया। अमोनिया क्या कर रहा था? इट वाज इरिटेटिंग द जी सेल्स, जी सेल्स क्या कर रहे थे? प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिन, एंड व्हेन दे प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिन दे वर स्टिमुलेटिंग द पैराइटल सेल्स टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ एसिड, hence the ulceration was occurring। तो एक तो H pylori inflammation cause करा रहा था, and hyper secretion of acid was causing the mucosal erosions resulting in ulcer। तो मेरा नेक्स्ट क्या है कि मेरा ये जो एक्सेसिव एसिड सेक्रीशन है उसको डिक्रीज करना। तो एक तो H pylori infestation है, another one is increased acid secretion है। ठीक है, तो ये मेरे दो कंपोनेंट्स है जिसके वजह से अल्सर बन रहा था। तो मेरा गोल बड़ा सिंपल है। व्हाट इज द गोल ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट? द गोल ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट इज H pylori eradication, H pylori eradication, and the acid secretion has to be reduced। So reduce the acid secretion, reduce acid secretion। ठीक है, इतना ही गोल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, कि भैया मुझे H pylori को इरेडिकेट करना है और एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है, एंड दैट शुड बी मोर देन नफ। नाउ इन ऑर्डर टू इरेडिकेट द H pylori बैक्टीरिया, ठीक है, इन ऑर्डर टू इरेडिकेट आई नीड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं यूजुअली अ क्लैरिथ्रोमाइसिन, आई विल बी यूजिंग क्लैरिथ्रोमाइसिन, I'll be using clarithromycin with either amoxicillin, or metronidazole। सो दो एंटीबायोटिक लगेंगे और एसिड रिड्यूस करने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। H2 ब्लॉकर्स कैन आल्सो बी यूज्ड, बट PPI समथिंग दैट वी यूजुअली कंसिडर इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप देखोगे आपने कितने ड्रग्स दिए, हाउ मेनी ड्रग्स डिड यू गिव? आई गिव 1 2, देयर आर 2 एंटीबायोटिक्स एंड देयर इज 1 PPI। तो इन तीनों को मिला के एक फैंसी नेम दे दिया आपने, बोला क्योंकि आप 3 ड्रग्स यूज कर रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द ट्रिपल थेरेपी।
सो ऐसे फालतू सा कुछ फैंसी सा नाम देना था, तो दे सेड इट इज अ ट्रिपल थेरेपी. Beta Raj, I told you before also, H. pylori produces ammonia, which is basically a base. It neutralizes the acid. Okay. Now, because it neutralizes the acid, that hypersecretion of acid won't affect the bacteria per se. In fact, H. pylori thrives in that environment. H. pylori can only grow in a gastric type of mucosa. ये हमने बड़े प्यार से डिस्कस किया था when we were talking about the entire pathophysiology. अगर if you have not remembered it, this is how the entire pathophysiology of the gastric ulcer are taken place. ठीक है, we have discussed in detail. Just एक बार वापस एक बार ये वीडियो देख लेना, you'll get the entire idea of what has happened and how it is going to be happening. ठीक है, चलो, हमको ऐसी बात करते ही नहीं है जहां हमने बताया ना हो यार, टेंशन नहीं लेना. ठीक है, so this is about the medical management. Now in the medical management, one thing was missing. You were eradicating the H. pylori, you were reducing the acid, so you're getting the goal done. But the problem is, every time the patient was eating, the food used to go and erode the ulcer, hence the ulcer was still painful. तो दर्द तो अभी भी है और वो रियल है. अब ये दर्द कैसे जाएगा, तो हमने बोला एक काम करते हैं, विल इंट्रोड्यूस अनदर टर्मिनोलॉजी. इसी में क्या करेंगे, विल ऐड द फोर्थ ड्रग. So if I add the fourth drug is going to be the ulcer protective drug. The fourth drug will be ulcer protective. And this ulcer protective drug was bismuth or sucralfate. So they actually coat the ulcer and prevent the erosion. And if you add this drug, so ये अगर ये चौथा ड्रग भी ऐड हो गया, in all these four to put together is what we call it as the quadruple. This is what we call it as the quadruple therapy. This is what we call it as the quadruple therapy. This is what we call it as the quadruple therapy, right? So in the medical management, this is the line. ठीक है, but a base of the ulcer is important to see how depth the ulcer is. Anyhow, if it is a gastric, we will take the biopsies. But again, it's a sequential endoscopy that you'll do. आज endoscopy के इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं करोगे, तो पेशेंट को ना ट्रीटमेंट में डालने के बाद you'll continue to do so. लेकिन सवाल ये है कि कितने दिन तक चलेगा. ये जो मेडिकल मैनेजमेंट है, ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रुपल थेरेपी शुड बी गिवन फॉर 2 weeks एटलीस्ट. तो ये प्रोटोकॉल 14 days तक है. अगर आप क्वाड्रुपल थेरेपी यूज कर रहे हो, दिस ऑल्सो शुड बी गिवन फॉर 14 days. ठीक है, either ways we now prefer quadruple therapy because it makes more sense to get a little bit of more relief for the patient as well. ठीक है, is that clear? Is that clear? ठीक है, तो ये आपका मेडिकल मैनेजमेंट हो गया. Nowadays you have got very good results with the medical management. बहुत कम लोग हैं जो सर्जरी के रिक्वायरमेंट के साथ जाते हैं. तो जो सर्जरी के रिक्वायरमेंट के लिए साथ जाएगा, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं. ठीक है, सो टॉक अबाउट इफ द मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स. इफ द मेडिकल मैनेजमेंट फेल्स, देन यू हैव टू गो विथ सर्जिकल मैनेजमेंट. So surgical management for peptic ulcer disease, right? So when you talk about the surgical management of peptic ulcer disease, there are two kinds of surgeries that you have. Again, the goal is same, right? एक तो H. pylori eradicate करना है. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो remove that area of the ulcer. So eradicate the site or the disease itself. ठीक है. Second, decrease the acid secretion, right? Now we all understand. If you look at the duodenal ulcers, the ulcers are formed in a hyperacidic environment. So I need to create an acid diversion or reduce the acid. So when you talk about the surgical management, मेरे 3 goals हैं. एक, eliminate, or I can say remove the diseased part. Remove the diseased site to a acid diversion or reduce the acid secretion.
ठीक है. So the goal for the surgical managements are quite simple. Either you remove the disease site, you cause an acid diversion, or you decrease the acid secretions. Okay. So in this context, I'll be explaining you multiple surgeries and we'll try to understand each one of them. I will start with the first one, which is called as the Billroth 1 surgery. Right now, every single surgery that we're going to talk about it is going to be very special in its own manner. We'll try to understand the chronology of how or what the things have been taken care and in what way did it move forward. Okay, so I don't want you to have any half measures, so we'll try to give you the same best idea for the same. Okay, so the first one is going to be your Billroth 1 surgery, right? So Billroth 1 is what technically is what we call it as a gastrectomy. Billroth 1 is what we call it as simple gastrectomy. Okay, let's try to understand this. Now imagine if this happens to be the esophagus and its continuation is in the stomach, and let's say this is the duodenum which is present here. Okay. Now when I say the ulcer is present here, okay, in the angularis incisura, right? It is not getting healed by medical management. सब कुछ ट्राई कर लिया, तो हम क्या करेंगे? बोलते ठीक है भाई, तुझे नहीं मानना तो मत मान. So I will excise this much part of the stomach. So the distal part of the stomach is going to be excised. ठीक है. So once I excise this much amount of stomach, ठीक है. So we say the lower half of the stomach, basically what we call this. ठीक है. So in Billroth 1, the lower half of the stomach, is removed. ठीक है. इसमें एडवांटेज क्या हो गया? I am removing the antrum of the stomach which consists of G cells which produce gastrin जो एसिड सेक्रेट कर रहा था. एक तो डिजीज एरिया भी निकाल दिया, ठीक है. सो रिमूव द डिजीज साइट. दूसरा क्या है, मैंने एसिड सेक्रेशन कम करा दिया. सो इट इज गोइंग टू हेल्प इन द मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स. ठीक है. अब what are you left out with? You are now left out with the stomach which was partially excised. This is the lumen of the stomach and obviously the duodenum that you have left behind. ठीक है. तो ये आपका the C loop of the duodenum that was present here, it's still intact. It is still intact, so this remains here. ठीक है. Now this is the stomach, this is the duodenum. ठीक है. So what I'll do is I will suture this end, leave the lumen similar to that of this. तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो ल्यूमेन का साइज है, ये जो ल्यूमेन का साइज है, I have to match that up. Now once that is going to match up, eventually I am going to now make an anastomosis. So ultimately क्या होगा, this is the suture line of the stomach, this is what is left out. I will take the duodenum which is present here, I will position the duodenum and the stomach in this position, and then I will anastomose. So what did you anastomose? You have anastomosed the stomach to the duodenum. So ये जो gastrectomy है, इसको आप gastroduodenostomy भी बोलते हो. ठीक है. So now you created an anastomosis between the stomach and the duodenum, and this is what we call it as gastroduodenostomy. इसको आप Billroth 1 बोलते हो. Is that clear? Is it clear? ठीक है. So this is your Billroth 1 surgery. तो Billroth 1 में what did you achieve? You have removed the diseased part of the stomach. ठीक है. You have now reduced the G cells also. So the concentration of the gastrin in the stomach will decrease. So the parietal cell stimulation will decrease. So acid secretion will decrease. तो Billroth 1 में दोनों achieve कर लिए. Problem क्या है? When we talk about in Billroth, later we'll speak about it. You have the bile duct which is going to open here, which is here. ठीक है. Now by removing the distal part of the stomach, you have compromised the pyloric sphincter. And if the pyloric sphincter is compromised, that means whatever the content is present in the duodenum will now reflux into the stomach as well. And this reflux is going to be bile. And whenever the bile goes into the stomach, it will cause biliary gastritis. Remember, biliary gastritis is the most severe form of gastritis. तो patient को बहुत दिक्कत होता है Billroth 1 से. ठीक है. Now,
तो बोला चलो इसको काउंटर करने के लिए ना एक नया सर्जरी क्रिएट करते हैं, उसका नाम हो गया बिलरॉथ 2। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द अदर नेम फॉर बिलरॉथ 2 सर्जरी? बिलरॉथ 2 का एक और नाम, इसको बोलते हैं पोलिया सर्जरी, also known as the polya surgery. It is also referred to as, just give me 1 second guys, I'm getting a call, just hold on for a second. Hello, Shabazz man. Okay, sorry guys. Okay, so this is what we call it as the polya surgery. ठीक है, तो polya surgery is the other name for Billroth 2 surgery. ठीक है, तो अब Billroth 2 या polya में अब कर क्या, the same thing remains here. So in the Billroth 2 or polya, this is the stomach. Again कितना remove करना है, all this is going to be fairly technical, that I will keep it very simple across it. ठीक है, so this is the stomach here. We have the ulcer which is present. This time I will take a major chunk of the stomach. So the 2/3 of the stomach is going to be removed. In Billroth 2, like in Billroth 1, you're removing only the distal half. Here I am going to remove the 2/3 of the stomach. ठीक है, so when you're removing the 2/3 of the stomach, it will except for high on lesser curvature. अगर आप high on lesser curvature के बारे में बोल रहे हो, उसको छोड़ के बाकी सारे जो अल्सर्स हैं that are going to will be covered in Billroth 2 surgery. ठीक है, तो Billroth 2 वाले में now I have removed the stomach. ठीक है, तो मेरे पास only 1/3 of the stomach is left behind. ठीक है, to be very honest, ये मेरा 1/3 of the stomach which is left behind. So the distal 2/3 of the stomach, the distal 2/3 of stomach is removed. The distal 2/3 of the stomach is removed. You are now left out with the duodenum which is present. The duodenum is going to be continuous with the jejunum. The jejunum will be continuous with that of the ileum. So what we'll do is I will close the duodenum as a duodenal stump because I don't want the bile to reflux. Just जो हमने अभी सीखा था ना Billroth 1 में, Billroth 1 में प्रॉब्लम क्या है कि बाइल रिफ्लक्स हो रहा था तो बिलरी गैस्ट्राइटिस हो रहा था, तो मैंने डिओडनल स्टंप ही क्लोज कर दिया. नाउ वंस यू हैव क्लोज द डिओडनल स्टंप, हाउ will you maintain the continuity of the food? So for that, if this is the duodenum, this was the jejunum that is there, so we mobilized the jejunum to this particular side. तो हमने क्या किया, jejunum को डिसाइड किया कि मोबिलाइज कर लेते हैं. तो now you have the stomach which is present here. What we did was we left the duodenum here only, we have not done anything, but we have taken the loop of the jejunum and we have positioned the loop of the jejunum here. So this is the jejunal loop that is positioned all across here. So the duodenal stump is closed, the bile duct is in its position, there is no problem. The bile will be excreting, it will go like this. Is the biliary limb. So what we did is, in the part of this jejunum, I have excised the jejunum in a longitudinal fashion like this. तो jejunum को मैंने longitudinally खोल दिया. So once I've excised it, now I'm going to suture the stomach with the jejunum. ठीक है, and now once I've sutured the stomach with the jejunum, now I have created a passage for the food. Now the food that comes into the stomach via the jejunum will now go here, right? Now obviously the bile that is flowing from this end will now flow here. ठीक है, so now you have achieved the entire result. ठीक है, so again by removing the 2/3 of the stomach, you are able to control the gastrin.
You are able to control the gastrin that has been produced because you have removed it. At the same time, you're diverting, you're bypassing the duodenum because the ulcers are present in the duodenum. So if you look at the Billrod 2, did we remove the disease site? Yes. Did you do an acid diversion? Yes, because stomach, the normal acid is produced in the stomach. It was supposed to go into the duodenum, but now the acid which is produced here will directly go into the jejunum. So acid diversion is also achieved. And the third one, did you reduce the acid secretion? Yes, we reduce the acid secretion also. And this is what we call it as the Billroth 2, or also called as the Polya surgery. Okay. So we have two surgical options. We have a lot many more, but these are the two surgical options that you should be aware in terms of the management of the peptic ulcer disease, that is Billroth 1 and Billroth 2. Okay. Now, as we continue on the entire series, I'll add a few more surgeries as we keep on going. But this is what you need to remember for today's discussion, that we had the medical management. If it fails, we go into surgery. In the surgery of Billroth 1 and Billroth 2, the few other more surgeries which are left behind, we will discuss in our subsequent classes. Okay. So thank you so much for joining today. You know where will we find our notes and everything. This is going to be on the Instagram as well as your Telegram group. It is called as the Surgery Guy. Okay, the Surgery Guy, it is by my name, that is Dr. Sandeep Seeram Reddy. Any questions, any queries, you can post it down here as well, right? So thank you so much for joining today. Had a lovely time. Any questions, any queries, keep pushing, keep posting. We will, don't forget to get on for another class. I'll schedule the class tomorrow only. All those who are here listening, usually the BLS is Monday, Tuesday, Wednesday, because we are not able to do it on Wednesday. I mean, Tuesday we had a leave off. Tomorrow I'm scheduling the same class evening on Thursday. So we'll do one class tomorrow so that we keep up the streak. Thank you so much for joining. See you guys. You've been lovely, and take care. Bye bye. Thank you, Raj. Thank you, Pratik. Thank you, Kutaro Chan. Right. All your support means a lot to me, as well as, you know, a lot of cross motivation as well. Hope you do well. But my rapid revision notes are good enough to crack your FMG exam, your NEET PG, your INICET. Just give it a go, and I'm pretty sure that you will be able to crack all your surgery questions. Not only surgery, you will do a fair amount of anatomy, physiology, pathology, a bit of micro, pharma, medicine, radio to pura hi covered hai, so don't worry about it. So it's just not surgery. When you go to my rapid revision series, you will be able to cover at least 60 to 70 questions on a NEET PG, 40-50 questions on your INICET, and a 60 to 70 questions in an FMG exam. Right? Don't worry about it. सो ब्रेस्ट टेस्ट रेजिमेंट, या बेटा यूरियस ब्रेस्ट टेस्ट हमेशा पहले और बाद में भी करना पड़ता है, ठीक है? आपको मेजर करना है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द यूरियस प्रोड्यूस्ड इन द ब्रेथ। आप फिर ट्रीटमेंट शुरू करोगे, फिर उसके बाद वापस करोगे, तो उससे ये पता चलेगा कि देखो, अगर ब्रेथ यूरियस का लेवल ना ट्रीटमेंट के बाद कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया खत्म हो रहा है ना, क्योंकि यूरियस इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया है ही नहीं तो यूरियस नहीं बनेगा, ठीक है? इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो पहले मेजर करोगे ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रुपल थेरेपी दोगे, फिर बाद में मेजर करोगे। तो पहले और बाद में के में लेवल आप मेजर करोगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। घट रहा है तो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सिव है, नहीं बढ़ रहा, नहीं घट रहा तो मतलब इट इज रेसिस्टेंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर? और कोई सवाल, कोई शक? Thank you so much. Take care. Good night. Bye bye.